राइट तो आज आम डिस्कशन करबा ईबीएस टा कोन ओके आ को टाइप रो केते प्रकार ईबीएस वॉल्यूम टा दोची ता ऊपर हमें डिस्कशन करबा जेमति कि हमें गोटे स्टोरेज सिस्टम ऑलरेडी डिस्कस करि सारी छै इसी हमरो एडब्ल्यूएस जोडा कोन हला S3 जोडा स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट राइट जोटे कि हमें केवल ऑब्जेक्ट स्टोर करी रखि परिबा तो वर्तमान हमें ईबीएस वॉल्यूम ऊपर डिस्कशन करबा ईबीएस स्टोरेज सिस्टम ऊपर जोटा कि हमें दैट कैन बी ए बूटेबल वॉल्यूम बूटेबल माने जो स्टोरेज सिस्टम ता हमें ताको बूटेबल करि परिबा माने किछि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करि परिबा किछि एप्लीकेशन इंस्टॉल करि परिबा राइट सो लेट्स सी व्हाट इज दिस EBS so Amazon Elastic Block Store or EBS allows you to create storage volume and attach them to Amazon EC2 and attach them to Amazon EC2 माने Amazon EC2 रे जो हमर जेकोनसी सुनो जोटा कि हमें EBS टा को हमें एमती नॉर्मल वे रे जदि हमें बुझिबा को चेष्टा करिया जदि लैपटॉप हमें नउचे राइट गोटे कंप्यूटर नउचे डेस्कटॉप नउचे के पीसी नउचे तो तादरे हमें देखुतबा हार्ड डिस्क गोटे ऐड हुए अटैच हुए एबे आजिकल आसुची SSD जोडी सॉलिड स्टेट ड्राइव टा SSD जोडा हार्ड डिस्क ड्राइव थिला सेटा बर्तन रिप्लेस नॉट रिप्लेस एग्जैक्टली बट स्टिल अवेलेबल ता सहित हमको SSD आसुची राइट सॉलिड स्टेट ड्राइव जोटा कि गोटे स्टोरेज ता जो दो स्टोरेज रे हमें जेकोसी माने कोन से स्टोरेज को पार्टीशन करके हमें तादरे हमें सॉफ्टवेयर हमर इंस्टॉल करि परिबा ता सहित हमें स्टोरेज टाइप डेटा भी स्टोर करी रखि परिबा राइट तो Amazon EBS कोन कोचिना गोटे काइंड ऑफ डिस्क काइंड ऑफ वॉल्यूम तो हमें जित्ती की हमर कैपेसिटी जित्ती की वॉल्यूम रो साइज दरकार है हमें सेत्ती की प्रिसाइजली वॉल्यूम हमें नहीं परिबा नहीं करी यूज करके अटैच कर परिबा सर्वर को हमें गोटे देखिथिबा हमें सर्वर गोटे EC2 सर्वर हमें जत्तबेले भी गोटे नउचे किबा गोटे लैपटॉप नउचे सेठी कोन होछ ना हमर प्राय टाइम से लैपटॉप को हमें कोन करछे जदी लैपटॉप रे एक्स्ट्रा हार्डवेयर हमर दरकार राइट तो हमें कोन करछे ना सेटा को बेसिकली से एक्स्ट्रा हार्डवेयर टा हमें आनी पुनी अटैच कर दोचे लैपटॉप रे तो जेमति कि हमर एक्सटर्नल ड्राइव हमें को जाय एक्सटर्नल ड्राइव राइट से एक्सटर्नल ड्राइव रे हमें कोन करछे ताको ऐड कर दोचे राइट तो Amazon Elastic Block Store by EBS allows you to create storage volumes and attach them to Amazon EC2 instances. So then once attached, you can create a file system on top of this volume, run a database, use them in any other way you would like the blocks devices. Amazon EBS volumes are placed in a specific availability zone, where they are automatically replicated to protect you from the failure of a single component. So specific availability zone तमे जेतबेले हमें क्रिएट करूचे EBS वॉल्यूम राइट जेतबेले गोटे सर्वर क्रिएट करछे तो जदी हमें गोटे चूज करछे गोटे अवेलेबिलिटी जोन तो कोन करछे ना से अवेलेबिलिटी जोन रे जो भी डाटा सेंटर अछि तो कोन करछे ना से सही डाटा सेंटर रे पर्टिकुलर से EBS टा रखुची माने वॉल्यूम टा स्टोर करछी तो से कौन कहला ना Amazon volumes are placed in a specific availability zone where they are automatically replicated. Automatically replicate means replication means good exactly same kind of replications whatever we have in one place that same contents to be placed in another place. We are replicating. So हमें replication already देखी जो कोड दले S3 रे क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन गोटे रीजन रु नै आ गोटे रीजन रे हमें रखुतले सेम डाटा जो गोटे रीजन रे अछि सेटा अवेलेबल थिला गोटे रीजन रे तो एटी कोन होछि ना जो EBS वॉल्यूम ता हमें गोटे स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी जोन जेतो हमें क्रिएट करछि और होछि बाकी ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट के करछि ताको AWS ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट करछि तो रेप्लिकेशन एथि पई होछि बाय चांस हमर किछि डिजास्टर हैला राइट किछि प्रॉब्लम हैला so say particular data center this particular availability zone is not available now so what will happen whatever data we have now will be always available in a different availability zone kaiki na eta automatically replications kari different availability zone re suppose AG1 first created hela eta automatic replay kari a gote availability zone re keep karuchi rakhuchi right rakila mane je konsi जदि एटा डाउन होला तो हमर डाटा कैन बी अवेलेबल फ्रॉम अदर अवेलेबिलिटी जोन राइट
So it allow EBS volume. What is says EBS volume allow you to create storage volumes and attach them in EC2. Once attached, you can create file systems. So basically, जब हम EBS volume ऊपर जाएगा, EBS volume is a block storage where you can use as a storage to install your operating system, install your databases, install your applications. Whatever thing you want, you can do in the EBS side. So there are different EBS volume types are there. Okay, one is the general purpose SSD, general purpose SSD. Another one is the provision IOPS. So general purpose SSD means general purpose SSD. That short term quotient is GP2. Okay, general purpose SSD is a balances both prices and performance. Ratio of 3 IOPS. IOPS means input output per second. Input output per second. माने केते इनपुट आउटपुट माने तमरा रीड आउ राइट जोटा कि हमें कहूची रीड आउ राइट होची राइट माने कोन किछि लेखिबो एंटर करिवो यू आर गोइंग टू इंसर्ट समथिंग and getting response back also, right? So input output per second, 3 ratio per 3 input output per second GB per GB with up to 10,000 IOPS and the ability to burst up to 3,000 extra for extended period of time. Okay, so volumes are 333 GB and above. तमे SSD use करि पारिबो. Okay, so general purpose SSD ପାଇଁ use होची. आ गोटे छै provisioned IOPS. The provisioned IOPS तमे काहे कि नबो designed for input output intensive application such as large relational or non-SQL databases. तो provisioned IOPS IO1 केतबेल तमे यूज करिवो जदि तमे गोटे applications यूज करछो which is more into input output intensive. माने को application की कहबो गेस करिवो को application टा more input output intensive होइता है गोटे database application. तो database application रे mostly कोन होछ ना हमरो प्राय database application रे what do? We insert data, right? We fetch data, we update, we delete also, right? So जोटा कि हमरो इनपुट आउटपुट इंटेंसिव एप्लीकेशन सहित तमे से जगह रे प्रोविजन IOPS टा चूज करिवो. तो डिपेंड करूची तम रिक्वायरमेंट हिसाब तम रिक्वायरमेंट जदि गोटे स्मॉल एप्लीकेशन तमे यूज करूछो किछि एप्लीकेशन जोटा जनरल पर्पस जोटा कि यूज करिवो तमे बेसी किछि एते इनपुट आउटपुट पर सेकंड्स आसीबार नै माने एते रीड राइट होउनी जेमति कि गोटे एप्लीकेशन धरो गोटे सपोज गोटे एप्लीकेशन रोचे हमर ट्रेडिंग एप्लीकेशन. तो ट्रेडिंग एप्लीकेशन रे कोन होछि ना पर मिली सेकंड्स पर नैनो सेकंड्स द प्राइस ऑफ an equity or anything जोटा कि तमे करछो किछि ट्रेडिंग करछो ता प्राइस ता चेंजेस होछि. तो से प्राइस ता को अपडेट करे पे अप टू डेट करे पे तो हमें कोन करे ना ताको इंटेंसिव सब बले प्रोविजन IOPS ता यूज करिबा. ओके, यूज इफ नीड मोर देन 10,000 IOPS can provision up to 20,000 IOPS per volume. Per volume it can be provisioned up to 20,000 IOPS. Okay, next comes we have हमें कौन देखिले बटन जनरल पर्पस SSD and provisioned IOPS. आ गोटे कोन दोची हमर थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड SSD हार्ड डिस्क ड्राइव. हमें सेतो देखिले SSD solid state drive. Now it is providing also SSD hard disk drive. So throughput optimized SSD or ST1 when you should use it for big data. If your application having big data warehouse for log processing. And one more thing is this throughput optimized cannot be boot volume, means you cannot install any application, you cannot install any operating systems, cannot be bootable. Okay, आउ जो दुटा हमें देखिले जनरल पर्पस SSD और प्रोविजन दिस कैन बी बूटेबल. बोटेबल हे पर हम किछि इंस्टॉल कर पारिबो.
Next one comes cold SDD. Cold SDD. The cold SDD कौन सी ना lowest cost storage for infrequently accessed workloads. Lowest cost storage for infrequently accessed workload. Infrequently accessed means पड़ोनी. Infrequently. Frequently means regular जोड़ा पड़ोची. Infrequently means हमें जोड़ा regular दरकार पड़ोनी. बहुत rarely हमें use करूचे. तो सही type रो workload को lowest cost storage पे हमें use कर पाएगा. Right? Our file server पे हमें use कर पाएगा. Cannot be boot volume. So these two cannot be boot volume. Cannot be boot volume. ଆଉ ଗୋଟେ ସେମାନେ provide କରୁଛନ୍ତି magnetic standard. Magnetic volume जोड़ा कि lowest cost per gigabyte. So ये जो magnetic तमे वे तो जानी नथियो तो मे बी जन्म भी हे नथियो ता पूर्व आमे जो यूज करतलो कंप्यूटर ये तो सेतबे तिला फ्लॉपी ड्राइव्स जानि छ सुनिछ फ्लॉपी ड्राइव से तो यूज ना फ्लॉपी ड्राइव्स रे थाए मैग्नेटिक टेप थाए थाए आगु गोटे मैग्नेटिक टेप और रील्स तो कैमरा थी ना रील्स सब थाए तो मैग्नेटिक टेप तो से मैग्नेटिक टेप रे कोन होछ ना डाटा हमरो सब अपडेट करा एंट्री करावे राइट. So those data gets updated there, right? So magnetic drive माने जो भी डाटा हमें स्टोर करि परिबे सेटा को नहीं फ्लॉपी ड्राइव जे कोन सिस्टम रे हमें रखले से चालू. तो हमें जदि से मैग्नेटिक भी प्रोवाइड करछि लोएस्ट कॉस्ट पर गीगाबाइट of all EBS volume types that is bootable. जो volume type है bootable तो magnetic is also bootable. Magnetic volumes are ideal for workloads where data is accessed infrequently and applications where the lowest storage cost is important. जोटी हमको lowest cost दरकार है बहुत देखो जहाँ भी हमें करूचे ना सब based on our requirement. तो हमको गोटे रिक्वायरमेंट आसला जोटी कि हमरो लो कॉस्ट भितरे गोटे गोटे पर्टिकुलर बजेट भितरे हमको गोटे सिस्टम दरकार जोटी कि हम इंस्टॉल करबा. तो सेठी कोन करबा हमें यूज करबा मैग्नेटिक स्टोरेज जोटी कि हमको दरकार हाई इनपुट इंटेंसिव दरकार सेठी कोन करबा हमें यूज करबा प्रोविजन टाइप्स राइट. ए हिसाब रे हमको चूज करिया पड़बा राइट. गुड. एनी डाउट EBS volume clear. तो हम इसको एबे नेक्स्ट हमें गोटे कोन करबा ना लाइनक्स मशीन एबे आउट गोटे क्रिएट करबा स्टोरेज सिस्टम अछि. तो सेटा केवल S3 टा हमरे ऑब्जेक्ट स्टोरेज किछि स्टोर करबा राइट. तो EBS टा केवल स्पेसिफिकली सर्वर पाई माने गोटे हार्ड डिस्क ता हमर गोटे मशीन पाई दरकार ना. तो EBS वॉल्यूम इज काइंड ऑफ हार्ड डिस्क जोटा कि सब सॉलिड स्टेट ड्राइव दोच माने गोटे काइंड ऑफ डिस्क राइट. से डिस्क ता हम कोड दरकार मशीन रे तमे मशीन क्रिएट करिया कोतरे EC2 सर्विस रे. तो एटा केवल EC2 रे ही यूज होछ. ओके. तो आ भीतर हम देखे देबी EC2 रो ऑप्शंस अछि हमें तो फर्स्ट क्लास रे हमें खाली EC2 पळेले हमें बेसी डिस्कशन करिने ता ऊपर. तो आज क्लास हम तुमको पूरा कंप्लीटली डिस्कशन बते देबी EC2 रे कोन डिटेल्स रहउची आ कोन हमें पढिबा कंप्लीटली. तो मु जेमति कि लास्ट क्लास रे कहितली तो एंटायर EC2 हमें कंप्लीटली सर्विस पढिया जाउचे तले मोर देन 2 वीक्स लागियो. Constantly more than 2 weeks. तारे बहुत सारा ऑप्शंस बहुत सारा सर्विस इंक्लूडेड अछि EC2 वीक रे. ठीक अछि. तो first let's go and log into your machine. What you can do now once you just log into your machine right, let's go to the services EC2 sections. Okay. Under EC2 sections last class रे मु कोन करथिला हम कोन करथिले ना केवल जस्ट गोटे आइडियास गेन करथिले केमति कोन सर्वर क्रिएट करिया. जस्ट फर्स्ट क्विकली गोटे सर्वर ओवरव्यू दिया आइतला. तो हमर वर्तमान जतो तमे डैशबोर्ड रे जहां भी सब ऑप्शंस अछि टैब अछि ताको कंप्लीट डिटेल्स से बुझिया पड़ी हला. फर्स्ट अछि डैशबोर्ड गलो एटी तमे डैशबोर्ड रे देखियो रिसोर्सेस माने EC2 रो कोन रिसोर्सेस रन होछ राइट. माने अछि अवेलेबल अछि इंस्टेंसेस केतरा इंस्टेंसेस रनिंग होछि गोटे गोटे इंस्टेंस माने गोटे मशीन. तो जोटा कि हम वर्चुअल मशीन कहउचे जोटा कि हेटा को EC2 रे माने हमर AWS रे कहउचंदी EC2 इंस्टेंस को आउच राइट. तो हमर गोटे इंस्टेंस अछि तो की पेयर अछि केतरा तीनटा सिक्योरिटी ग्रुप्स पांचटा ए सब डिटेल वॉल्यूम अछि गोटे इंस्टेंस गोटे. तो हमें जतबे गोटे मशीन क्रिएट करिया राइट. तो मशीन क्रिएट कला बेले देखि तो हमें से गोटे वॉल्यूम कोच सिलेक्ट करिवा पे EBS
तो बाय डिफॉल्ट EBS वॉल्यूम लाइनक्स रे 8 GB राइट तो आमे सेटा बाय डिफॉल्ट जोडा दउछ एटा सर रूट वॉल्यूम माने एटा ले रूट वॉल्यूम हमर जदि लैपटॉप हम तो नउछ लैपटॉप रे ऑलरेडी गोटे डिस्क सेट ही रहउछ सेटा ले रूट डिस्क सेटा तो हम रिमूव करतो लैपटॉप चलियोनी राइट तो से हिसाब रे रूट ड्राइव गोटे रहउछ जोटा कि रूट डिस्क रहउछ तमे EC2 इंस्टेंस रे सेटा को तमे यूज करियो राइट तापरे कोन होछ ना यदि एक्स्ट्रा ड्राइव हमें यूज ऐड करिया पे चाहूचे वी कैन ऐड एक्स्ट्रा ड्राइव्स आल्सो नेक्स्ट ओके सो इटी हमें केते कैटेगरी अच्छे देखो हला सब कैटेगरी ऊपर टिके टिके जस्ट ओवरव्यू दउचे तापर पुनी अगेन हमें सब जाक जहां भी कि हमें देखुचे राइट सब 1 to 2 क्लास मोर देन 2 क्लासेस न गोटे गोटे सब्जेक्ट जोटा हमें पढ़ी राइट फर्स्ट हमें देखो इंस्टेंस ऊपर ଆମେ କାଲି ଆମେ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ ତା ଉପରେ ଇମେଜ ଉପରେ ବି ଦେଖିଥିଲେ ତ ଆଜି ଆମର EBS ଭଲ୍ୟୁମ ଉପରେ ବି ଦେଖିବା ରାଇଟ୍ ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଯୋଉ ଅଛି ଇନଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆମର କଣ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଅଛି अवेलेबल कंप्लीट इंस्टेंस डिटेल्स देखैबो राइट वर्तमान गोटे इंस्टेंस जोटा कि रन होची बा गोटे मशीन वर्चुअल मशीन गोटे रन होची इंस्टेंस टाइप सो इंस्टेंस टाइप कोन व्हाट इज इंस्टेंस टाइप काली कथा आइतले इंस्टेंस टाइप कोन सतीश और अरविंद इंस्टेंस टाइप कोन in AWS why we need this instance types काली भी कहतली Okay, sir. Sir, instance type available all configuration. yes well, all hardware configurations right तमरो कोन RAM दरकार है कोन मेमोरी दरकार है कोन स्टोरेज दरकार है राइट तमरो CPU केते दरकार है तो CPU प्रोसेसर केते दरकार है तो सब हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस जहा जहा दरकार तमे सब इंस्टेंस टाइप रे रहइबो तो इमेज ता कोन AMI कोन template that is one of the template where you can keep your operating system the softwares the applications we can package it as an AMI then you can use it right so instance type हमें select करिबा को टाइप रो कॉन्फ़िगरेशन हमको दरकार है हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन गोटे मशीन पाई देन हमें इंस्टेंस टाइप यूज करिबा तापर लॉन्च टेम्पलेट यूज करिबा लॉन्च टेम्पलेट हमें गोटे क्लास जीवो पढिबा लॉन्च टेम्पलेट ऊपर स्पॉट रिक्वेस्ट सेविंग प्लान्स रिजर्व इंस्टेंसेस डेडिकेटेड होस्ट ए जो हमें ऑलरेडी पढी साथे ता ऊपर डेडिकेटेड होस्ट कोन पाई हमें नबा डेडिकेटेड होस्ट हला जेटा कि तमे multi tenancy is not available multi tenant means multiple people right can access that one but here in dedicated host that kon korchi na multi tenancy available nai mane tame multiple tenant allow kari paribo nai to tame jodi alga kichi plan noche reserved instances saving plan spot request au kon achi standard one right then tame use kari paribo multi tenancy the dedicated host mostly for private uses right for private cloud so we can go with private so capacity reservation also हमें instance type रे सब देखिबा धीरे धीरे काम करिबा तापर आसला हमें देखले AMI ऊपर राइट AMI ऊपर हम काली ऑलरेडी बुझे देछि AMI कोन मोस्टली टोटली AMI ऊपर हमें पढी देछि जानि भी देछि AMI जो जो वेराइटीज हमर ऑपरेटिंग सिस्टम रहउछि कोन टेम्पलेट को ऑपरेटिंग सिस्टम तमे तो हार्डवेयर सिलेक्ट कर दल कोटू इंस्टेंस टाइप रो कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट कर दल तापर चूज करबो ऑपरेटिंग सिस्टम तुमको कोन दरकार तो सही हिसाब से तुम AMI टेम्पलेट यूज करिवो राइट इन सिंपल वे इफ यू अंडरस्टैंड तो AMI यूज कले तो धरो उबुंटू मशीन दरकार कि CentOS दरकार कि विंडोज दरकार तो हमें सही हिसाब रे सिलेक्ट कर दले राइट देन AMI सेक्शन तापर हमें एबे आजि कोन देखिले इलास्टिक ब्लॉक स्टोर तो इलास्टिक ब्लॉक स्टोर इज नथिंग बट द वॉल्यूम्स राइट सो हमें दी वॉल्यूम ऊपर क्रिएट करियो हमर केतेटा मशीन वर्तमान रन होउची गोटे मशीन रन होउची गोटे इंस्टेंस रन होउची तो सही गोटे इंस्टेंस रो गोटी ही वॉल्यूम वर्तमान रूट वॉल्यूम अछि मो पाकर राइट तो हमें तो जिबा वॉल्यूम सेक्शन को सी ए वॉल्यूम आईडी ता अछि सो ए वॉल्यूम आईडी अटैच को डीज की क्रिएटेड अवेलेबिलिटी जो सी अटैच्ड रिसोर्स एटाला हमर इंस्टेंस आईडी राइट इंस्टेंस आईडी ओके लेट्स गो बुझी पालो वॉल्यूम स्टार्ट आसबो एबे चलो गोटे पुनी आ गोटे वॉल्यूम हमर सॉरी मशीन क्रिएट करबा इंस्टेंस क्रिएट करबा और सही इंस्टेंस रे हमें सब डिटेल्स रे इन डेप्थ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट एग्जैक्टली ईच ऑप्शंस यूज्ड फॉर ओके तो फर्स्ट इंस्टेंस को जिबा तो क्लिक ऑन लॉन्च
instance, right? So launch instance, just give a name like demo server. Okay, demo server B12 just now गोटे देदेली तापर आमे इमेज सिलेक्ट करिवा AMI तो आज धर लास्ट क्लास हम कौन सिलेक्ट करतली Ubuntu. So what is the default user ID of Ubuntu? What is the default user ID of Ubuntu machine? It is Ubuntu itself. Okay, so default user ID of Ubuntu machine is also Ubuntu, right? Okay, so ajiro class let's go ahead and select a different machine. Okay, हमें Amazon Linux choose करिवा. Last class रे हमें choose करतले Ubuntu, एबे class रे हमें choose करिवा Amazon Linux. So Amazon Linux रे जतला हमें choose करिवा Amazon Linux type रो तारो बहुत सारा टेम्पलेट वर्जन दउछ, राइट? तो प्राय जिते टेम्पलेट अछि देखिबो एति सब टेम्पलेट अछि तो ईच टेम्पलेट तमे जदी देखियो चाहछो Amazon Linux 2 2023 व्हिच इज फ्री टियर एलिजिबल जेटा कि फ्री टियर एलिजिबल अछि Amazon Linux 2 AMI that is also free tier eligible ता फ्री हमु किछि पैसा पड़िबनी तो Amazon Linux 2 तो सबु इमेज रे ता भितरे किछि ना किछि से एक्सप्लेन करिछि जदि हमें एई इमेज पर्टिकुलर नबा Amazon Linux 2 तो एथरे कौन से दोछि .NET 6 इंस्टॉल होछि ऑलरेडी तो Linux मशीन रे फर्स्ट टाइम .NET आगुरु एक्चुअली .NET केवल अवेलेबल होतला कोदरे विंडोज मशीन रे जदि जेतु माइक्रोसॉफ्ट .NET थिला ना .NET फ्रेमवर्क केवल विंडोज मशीन रे ही अवेलेबल होतला बट वर्तमान कोन होछि ना सब प्रकार Linux मशीन रे भी अवेलेबल रहउछि सब प्रकार Linux मशीन रे भी अवेलेबल रहउछि तो एठी वर्तमान देखियो Amazon Linux 2 रे हमर कोन .NET 6 सेटा रहउछि कोर आ गुटे तादरे सहित पावर सेल भी इंस्टॉल रहउछि तादरे मोनो रहउछि तादरे मेट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट ई सब एप्लीकेशन ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड रहउछि ए टेम्पलेट तो हमको ऑपरेटिंग सिस्टम पाइबा कोन Amazon Linux ता सहित .NET 6 पाइबा पावर सेल पाइबा मोनो पाइबा मेट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट पाइबा तो आमे जदी चाहेबा आउ किछि आनिबा पई अलगा किछि पई देखो किछि तमरो धर रिक्वायरमेंट से एटा म को कहछि ना तमे जहां भी यूज करिबा ना बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट तमरो रिक्वायरमेंट अछि धर तमे .NET रे काम करबा देन यू शुड गो फॉर दैट इमेज तमरो रिक्वायरमेंट अछि धर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रे काम करछ एआई मशीन लर्निंग रे देन व्हाट यू कैन तो इठा गोटे देखौ छी कोन डीप लर्निंग ओएसएस NVIDIA driver with AMI GPU TensorFlow 2.16 TensorFlow 2.16 सेमती GPU PyTorch जदि Python related application AI applications तमे करछ then you should go with deep learning OSS ताले तमे ए इमेज ता यूज करिवो तो एबे जानि पाले इमेज रो रिक्वायरमेंट कोन केमती को हिसाब रे तमे यूज करिवो so आमे वर्तमान आमर रिक्वायरमेंट आला आमे just doing we are doing practices right then let's go with the free tier okay Amazon 2023 select 2023 तापरे को टाइप रो आर्किटेक्चर तुमको दरकार 64 बिट इज प्रिफर्ड so let it be there आउ सबु इमेज रो गोटे गोटे यूनिक आईडी दिवो ताकू कुआ जाय AMI आईडी ओके सो हमु कोन करबो ना गोटे डिस्क्रिप्शन जो हिसाब रे हमको दरकार को आर्किटेक्चर दरकार सर 64 बिट ता 86 आर्किटेक्चर कि तमे जदि चेंज करिया पय चाहछो ARM आर्किटेक्चर यू कैन गो विथ ARM आर्किटेक्चर आल्सो राइट सिलेक्ट कलो तापर इंस्टेंस टाइप हमरो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कोन दरकार सिलेक्ट कलो तो जो टाइप रो तमरो रिक्वायरमेंट हिसाब रे तमे चूज करिवो तमरो रिक्वायरमेंट केमती तमरो डिसाइड करिवो तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस ऑन इटसेल्फ इज एक्चुअली ए टास्क राइट तमरो रिक्वायरमेंट धरो अछि गोटे ह्यूज डाटाबेस विथ ह्यूज नोड.js एप्लीकेशन रन करे तो सेति पय तमे कोन करिवो ना जो तरे अधिका मेमोरी वाला थिबो अधिका सीपीयू थिबो तो अधिका मेमोरी अधिका सीपीयू लेले कोन हो ना हमर प्रोसेसिंग फास्ट हो राइट प्रोसेसिंग दा फास्ट हो तो सेति पय हमें कोन करबा ना सिलेक्ट करबा T2 लार्ज हो कि किछि C5 लार्ज हो जोटा कि 16 GB RAM सब रोजी सिलेक्ट करबा बट हमर फ्री टियर पे हमर रिक्वायरमेंट हिसाब रे हमें T2 माइक्रो रिमेंबर केवल T2 माइक्रो जोटा दोछि फ्री टियर आउ तमे तो इंटरव्यू पय जाउछो तमे जदि पचारिबे क्वेश्चन
तमे जदि कहबो मु क्लाउड रे काम करिछि सेठी पचारियो मोस्टली तमे को क्लाउड रे काम माने को इंस्टेंस टाइप रे काम करो टी टू माइक्रो भूले कहबोनी कारण टी टाइप टू माइक्रो टा फ्री टियर रे आसुछि जोटा कि केवल प्रैक्टिस और आरएनडी ପାଇଁ यूज हो सो व्हाट यू कैन डू you can just go ahead and check this instance type so based on तमर requirement हिसाब रे तमे instance type टा select करिवो तमे free टायर select कले instance type तापर हम आसी की पेयर हम की पेयर जो लॉगिन टाइम में कले यू कैन यूज द की पेयर टू सिक्योरली कनेक्ट टू योर इंस्टेंस तो की पेयर कोन पई दरकार हमको गोटे की कोन दरकार तो कनेक्ट करिया पई सर्वर को तो हमें गोटे की पेयर दबा सो सो ए अकाउंट रे वर्तमान मो पाखरे तीनटा की ऑलरेडी अछि तो लास्ट क्लास रे मु तुमको देखैतली केमति की जनरेट करबा माउ देखे जाउनी क्रिएट न्यू की पेयर गोटे न्यू की पेयर मोर जदी एक्जिस्टिंग की पेयर किछ अछि तो मु सिलेक्ट कर देली डेमो v12 गोटे एक्जिस्टिंग की पेयर सिलेक्ट हे गला नेटवर्किंग सेटिंग तो नेटवर्किंग सेटिंग रे नेटवर्किंग ऊपर जस्ट बेसिक आईडिया भी आज देउची तापर नेक्स्ट हमें मूव करबा जेतो नेटवर्किंग पढिबा सेतो नेटवर्किंग ऊपर मोस्टली लेट मी एडिट इट ओके तो जेतो फर्स्ट एडी एडिट कली ना कोनसे मते पचारछि बीपीसी आईडी बीपीसी कोन द बीपीसी टा कोन वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड जोटा कि हमको नेटवर्क प्रोवाइड करछि तो बाय डिफॉल्ट हमें जेते बळे लॉगिन करबा बा गोटे अकाउंट क्रिएट करबा तो से हमको कोन करबा ना सॉरी एडब्ल्यूएस कोन करबा ना गोटे नेटवर्क दबो जोटा कि हमर बीपीसी कहउछन्ती राइट वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड जेमति कि अलगा अमेजन हमर आजियो रे रहउछि वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन राइट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एठी अमेजन रो एडब्ल्यूएस होछि वीपीसी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड तो वीपीसी टा कोन होता सिलेक्ट करिवो तो एठी डिफॉल्ट वीपीसी ऑटोमेटिकली से नउछि तो एठी मते ड्रॉप डाउन करी मो पाखरे गोटिए वीपीसी अछि गोटिए नेटवर्क जोटा कि मु अकाउंट क्रिएट कला बळे मते अमेजन देइदेला ସେଇଟା ହିଁ ମତେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯଦି ମୋର ନିଜର ଭିପିସି ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ ତ ସେଟା ମୁଁ କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଭିପିସି କ୍ଲାସ ରେ ପଢିବା କେମିତି ନିଜ ନେଟୱାର୍କ ଆମେ କ୍ରିଏଟ କରିବା ରାଇଟ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିପିସି ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ତାପରେ ସବନେଟ ତ ସବନେଟ ଟା କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି व्हाट इज ए सबनेट ଏଠି ସବନେଟ ଆମେ ଯୋଉ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛେ ତ ସବନେଟ ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ର सब नेटवर्किंग राइट जो मेन नेटवर्क रो सब नेटवर्किंग सबनेट टा जोटा रोची जहार गोटे पर्टिकुलर आईपी एड्रेस थाए राइट आईपी एड्रेस थाए पर्टिकुलर नेटवर्क थाए डिवाइड हेगा तो हमर सबनेट जो कराउची एतिरे बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी जोन ईच अवेलेबिलिटी जोन गोटे सबनेट मन रखता गोटे अवेलेबिलिटी जोन को गोटे सबनेट तो एटी कोन होछ ना वन अवेलेबिलिटी जोन वन सबनेट तो एपी साउथ 1 ए एपी साउथ 1 सी एपी साउथ 1 बी तो हमर कोन तीनटा सबनेट अछि ता माने तीनटा अवेलेबिलिटी जोन तो हमर मुंबई रीजन रे केतरे अवेलेबिलिटी जोन तीनटा मुंबई रीजन रे केतरे हला तीनटा अवेलेबिलिटी जोन एपी साउथ 1 ए एपी साउथ 1 बी एंड एपी साउथ 1 सी तीनटा अवेलेबिलिटी जोन मुंबई रीजन रे तो आ भीतर तमे जोटा सिलेक्ट करबो ठीक अछि तो हमें सबनेट ऊपर जदि अधिका जानियो चाहिबा लेट्स गो एंड लर्न ऑन सबनेट सी सब नेटवर्क जोड़ा बर्तन कोतले एटा नेटवर्क रो डिवीजन गोटे सब नेटवर्क इज ए सेगमेंट पीस ऑफ लार्जर नेटवर्क गोटे लार्जर नेटवर्क रो सेगमेंट पीस जेमति कि एटी मु तुमको बर्तन बतैली जे हमरो कोन जो नेटवर्क रोजी मेन नेटवर्क कोन रहला हमरो बीटीसी टा तो तार गोटे पार्ट राइट जो गोटे नेटवर्क हमें क्रिएट कले तार गोटे पार्ट रोची गोटे सबनेट तो से सबनेट रो को पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी जोन हमें चूज करिवा तो सपोज दिस अवेलेबिलिटी जोन मु चूज कलु ता माने मोर जो मशीन क्रिएट हबो से पर्टिकुलर सबनेट रे ही क्रिएट हो राइट तो जति मु चाहूची लेट AWS डिसाइड माने AWS डिसाइड करिवो को अवेलेबिलिटी जोन से रखिबो देन मु कोन करबी नो प्रेफरेंस तो किछि प्रेफरेंस देवन मु चाहूची ना AWS ता हिसाब रे जोटी रखिया पे बट तमे जदी किछि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट अछि को अवेलेबिलिटी जोन रखिबा को then you can go ahead and select that availability zone okay then public IP so mu last class e कहथि public IP टा कोन IP टा what is IP actually internet protocol
What is IP? Sir, Internet Protocol. Internet protocol. Can anybody explain me how IP works? Okay. पूरा डिटेल्स से जदी जीबी आईपी नेटवर्किंग से गोटे दुईटा क्लास लागि जीवो हला तुमको ओवरव्यू दे दोछि आईपी रो काम कोन होछि आ आईपी केमती डिसाइड करछि आईपी केते प्रकार रहउछि हला तो बेसिकली आईपी रो फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल राइट तो आईपी केते प्रकार रहउछि टू प्रकार गोटेला IPv4 आ गोटे रहउछि IPv6 IPv6 सो IPv4 आमे देखिथिबे IPv4 केमति रहउछि 12.134.3.14 तो एटा कितना ब्लॉक रे रहला चारटा ब्लॉक रे राइट IPv4 तो आमे जतले IPv4 देखुचे राइट वर्जन 4 आमे IP वर्जन 4 आ IPv वर्जन 6 भीतर डिफरेंट कोन होछि ना IPv4 versus IPv6 okay IPv4 sorry I option difference between IPv4 and IPv6 प्रत्येक block right is 8 bit okay each block is so total 4 blocks so each block total 4 blocks so each block is 8 bit each block is 8 bit so total 4 blocks 8 total है 32 bit रो IP address 32 bits रो but एटा है each block 32 bits रो आर आसी जीवो actually 128 bits 128 bit तो जोटी 32 bit आमे यूज करूचे आ 128 bit तो 32 bit रो जो काई के आमे जदी आमे IPv4 यूज करथले देन IPv6 कोन पई आसला ना IPv4 एक्चुअली हमें मार्केट रे वर्तमान जेतल देखिबा IPv4 रो मोस्टली कोन होछि ना जेते भी मार्केट रे हमें डिवाइस सब यूज करछे सो प्रत्येक डिवाइस रो कोन होछि गोटे गोटे आईपी एड्रेस रहउछि तो हमें खाली डिवाइस कहया माने हम कंप्यूटर नो कि लैपटॉप नो तो डिवाइस हम पाखे रहउछि कोन लैपटॉप्स रहउछि मोबाइल्स रहउछि राइट डेस्कटॉप लैपटॉप मोबाइल्स आजिकली सब आईओटी आछि गला डिवाइसेस तो सबू डिवाइस रे गोटे गोटे एड्रेस रहउछि राइट तो हमें गोटे नेटवर्क एड्रेस आईपी गोटे कोन इंटरनेट प्रोटोकॉल गोटे नेटवर्क एड्रेस को एड्रेस तमे रीच करियो राइट तो मु डिफरेंस बते दोछि IPv4 तो IPv6 होछि 128 बिट एड्रेस 128 बिट एड्रेस फॉर्मेट और IPv4 होछि 32 bit रो एड्रेस फॉर्मेट बट both IPv4 and IPv6 are two versions of internet protocol addressing systems so IP कोन होछि is a set of communication rules set of communication कोन लिखछि set of communication rules that provide data exchange over the internet IP is a set of communication rule so this internet protocol is nothing but a set of rules defined to communicate over internet okay suppose इरा कोन IP इंटरनेट प्रोटोकॉल बा IP एड्रेस तो मैं बेसिकली आमे जतले IP एड्रेस विषय कथा होचे राइट तो कोन पई दरकार तो तमे गोटे लोकेशन सपोज तमे तम गरु तमे चाहूछ जिबा पई गोटे लोकेशन को आ गोटे गरु राइट तो कोन करियो ना एटी पहुंचीबा पई तमर आर कोन दरकार एड्रेस दरकार व्हाट इज दरकार फिजिकल address of that area but that house so then what you can do you can go ahead and reach this place okay so similarly ame jitobel gote computer systems तम पाखे तम सपोज लैपटॉप अछि राइट तम पाखे तम
laptop ଅଛି. What you are doing? You want to connect to a machine which is suppose placed in Singapore region. It is in suppose in Singapore or in USA. The server is in USA. एटा ला गोटे सर्वर तमे चाहूछ कनेक्ट करिया पई मशीन को तो तमे कोन दरकार आरो मशीन रे कोन दरकार आईपी एड्रेस दरकार तो आईपी एड्रेस तमे तो एटी पुट करूछ सेही आईपी एड्रेस द्वारा तमे कनेक्ट करिवो तो जो आईपी एड्रेस ता तमे एटी यूज करिवो आईपी एड्रेस ता राइट सेटा केमिति जानिबो जे ए पर्टिकुलर सर्वर होची जोटा कि मु कनेक्ट करबा को जाउची राइट से आईपी एड्रेस केमिति जानिबो ओके आमे जेम देखली कि आईपी एड्रेस रे मु नॉर्मली IPv4 विषय मु बर्तन कहूची IPv4 तो आमे धरो सपोज 12.164.32.1 ओके एटा हला तर एड्रेस ता तो वर्तमान आमे देखिबो कि जिबा जदी एटा केना चारिटा ब्लॉक रे अछि राइट प्रत्येक ब्लॉक हला 8 bits टोटल हला 32 bits राइट तो first two blocks if blocks टा हला कोन नेटवर्क आईडी आ गोटे ब्लॉक हला कोन अच्छा तो नेटवर्क आईडी आ गोटे हला मशीन आईडी ओके तो देखो मशीन आईडी माने तमरो लैपटॉप जो लैपटॉप तुम कनेक्ट होछ गोटे मैक आईडी थाए लैपटॉप आईडी मैक मशीन आईडी आ गोटे हला तमरो नेटवर्क आईडी तुम जो नेटवर्क को कनेक्ट करिछ समस्त नेटवर्क आईडी फर्स्ट नेटवर्क आईडी ता माने कोन तमरो तर तुम जियो नेटवर्क को यूज करिछ जियो नेटवर्क तर मो लैपटॉप को कनेक्ट करिया रहला फर्स्ट मो लैपटॉप रो एड्रेस तो तुम पाइबो दरकार राइट लैपटॉप रो डिवाइस आईडी जोटे कि हमर को छै मशीन आईडी बा डिवाइस आईडी तुम डिवाइस आईडी पाइलो तो डिवाइस आईडी टा पाइलो फर्स्ट फर्स्ट टू ब्लॉक्स रे तो सेकंड ब्लॉक्स रे हम खोजियो नेटवर्क आईडी टा कोन धर तुम जियो यूज करूछो जियो प्रोवाइडर या फिर एयरटेल यूज करूछो राइट तो प्रत्येक नेटवर्क प्रोवाइडर गोटे गोटे आईडी थियो से आईडी टा केमते होची जोटा कि हमें सुने राउटर बसौचंती राइट वाईफाई राउटर सो राउटर गोटे नेटवर्क डिवाइस राउटर टा भी गोटे डिवाइस ना सो से डिवाइस आईडी गोटे रहला से डिवाइस आईडी नेटवर्क आईडी जोटा कि नेटवर्क हिसाब रहला से नेटवर्क आईडी रे जो नेटवर्क को तमे कनेक्ट करूछो राइट से नेटवर्क आईडी गोटे रहला से नेटवर्क आईडी प्लस तमरो डिवाइस आईडी एरो एड्रेस द्वारा जोटा कि हमें कनेक्ट कर पाछे ठीक अछि वर्तमान तमे जियो नै छ जियो रो गोटे नेटवर्क आईडी रहला तो तार आईडी आईपी एड्रेस रहला तमे जति तम सेम लैपटॉप रे वर्तमान धरो मु लैपटॉप कनेक्ट करछि कोथाय जियो नेटवर्क ओके तो मु जदी खोजिबी जियो नेटवर्क रो मोर आईपी एड्रेस गोटे डिफरेंट आसीबो बट जदी एयरटेल मु कनेक्ट कली देन एयरटेल गोटे डिफरेंट आईपी एड्रेस कोन बट मोर डिवाइस आईडी विल बी सेम डिवाइस आईडी विल बी सेम बट योर नेटवर्क आईडी विल डिफर राइट आईपी विषय बहुत किसी अच्छे नेटवर्क विषय जानिया पाई तो मु खाली तुमको जस्ट बेसिक बतई दरी ओवर माने जस्ट वेरी बेसिक्स तुम बतली IPv4 आईपी एड्रेस ता कोन पाई हम यूज होछ नॉर्मली टू कम्युनिकेट फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर थ्रू इंटरनेट आईपी एड्रेस ता हमको दरकार एटा बेसिक ता भीतर तमे पूरा डिटेल्स रे जानिया पे डिटेल्स रे काम करिया पे आईपी केमति काम करछि गूगल सर्च करके टोटली आईपी विषय आईपी नेटवर्किंग विषय बिकॉज नेटवर्किंग इटसेल्फ इट विल टेक 3 to 4 months टू कंप्लीट खाली नेटवर्किंग हम जदी पढिबा 3 to 4 मास लागि जेबा नेटवर्किंग रे हम सिखिबा पाई तो एटा तो नेटवर्किंग क्लास में तुमको जाउनी कि नेटवर्किंग बतल इवन मु भी प्राय नेटवर्किंग कांसेप्ट भूली जाई छी तो जति कि माना हम सेटा बेसिकली यूज हुए नी तो बेसिक आईडिया जति कि नेटवर्किंग तमे दरकार तमे सेटा यूज करिवे हैला तो IPv4 आ IPv6 विषय हम जानले जोटा कि 32 बिट आ 128 बिट रे काम करछि राइट ओके
तो ये जो डॉक्यूमेंट्स अच्छे तुम पढ़ो की डिफरेंस एटा रोची देख की डिफरेंसेस IPv4 आ IPv6 रे रोची एड्रेस स्पेस ता जोटा कि से माने कैलकुलेट केमती कोन कैलकुलेट करिवो तार कैलकुलेशंस भीतर रोची IPv4 पैकेट्स आर कंपोज्ड डिफरेंटली जेमती कि फुल एड्रेस स्पेस जदी IPv4 विषय कथा होत ना काहे कि हमें IPv6 आसिला राइट जेमती कि हमें प्रत्येक लोको पाखे वर्तमान आज का डेट रे each and every person is having one or more than one devices are ता पाखे दुईटा तीनटा मोबाइल ता पाखे दुईटा लैपटॉप तीनटा लैपटॉप राइट तो गोटे पिला पाखे जदी हमें अप्रोक्सीमेटली दुईटा के तीनटा दुईटा धरिले राइट दुईटा आईपी से धरला राइट डिवाइस दुईटा मतलब दुईटा आईपी एड्रेस तो ये बेले 130 केवल इंडिया कथा हम कहूची 130 पॉपुलेशन 30 करोड़ पॉपुलेशंस 130 करोड़ पॉपुलेशंस रे मोबाइल डिवाइस यूज करते हो तो ऑलमोस्ट अराउंड 70 करोड़ या 70 करोड़ पीपल यूज करते तो 70 करोड़ पीपल यूज करते से हिसाब रे डिवाइस यूज करिया माने सेति के डिवाइसेस यूज करते पीपल ता सहित पुनी कंपनी केते सेटअप अछि सब कंपनी केते केते लैपटॉप डेस्कटॉप सब सेटअप हो तांकर फ्री नेटवर्क से आईपी एड्रेस केते अछि तो इवन जदि हम देखिबे तो मोर देन दैट केवल इंडिया रो जदि हम स्पेसिफाई सेबा ऑल ओवर वर्ल्ड रे केते आईपी एड्रेस यूज होउची तो बेसिकली देखिबा गले जो आईपी एड्रेस ता रहउची 32 बिट रो तार वर्तमान आउ एड्रेस स्पेस नाही सेति पई बुझी ना नेक्स्ट से माने कोन करछ ना एबे आरएनडी करि कि IPv6 इंप्लीमेंट करिसेंती जोटा कि IPv4 आजिकल देखिबा बोथ एड्रेस तमे दीटा को रहउची IPv4 रहउची आ IPv6 रहउची तो से धीरे धीरे IPv4 को बंद कर दो माने आउ IPv4 आईपी एड्रेस असाइन हबन नेक्स्ट जो असाइन हबो IPv6 कारण IPv4 is going to be end that is going to over ता एड्रेस ताम पकर नाही तुमको नुआ एड्रेस जेमति कि आज का डेट रे बर्तन पृथ्वी पृष्ठ रे भी माने देखिबो चाइना रे जेमति कि स्पेस नाही लोक रहिबा नै तो से माने कोन करछि नेबर कंट्री रे जाई करी रहिबा स्टार्ट करी इवन चाइना भी प्लान करछि कि मून रे घर करिया पे जे तो 89 ता एड्रेस फिल अप पूरा तो सेटि जाई कि कुछ सेही टाइप रो IPv4 is going to be over next they are planning for IPv6 the IPv6 at 128 bit is very huge that हमें जदि चेष्टा करबे ना पूरा एंटायर पृथ्वी राइट पूरा एंटायर पृथ्वी को भी कवर करी छै IPv6 एड्रेस तो एटा होची नेक्स्ट केते इयर्स जीवो एडा हमें जाने बट दैट कैपेसिटी अछि जोटा कि पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड को अर्थ को कवर करि पाइबो ठीक अछि तो वर्तमान देखो address space the full address of IPv4 is 2 to the power 32 so total is so 429 crores okay that means 4 billion only 4 billion IP address spaces so 2 to the power 32 जदि हमें कैलकुलेट करिवा तो only 4 billion IP address पाइबा only 4 billion IP has been significantly higher address to higher address of 228 so हमें जदि कैलकुलेट करिवा एटाला कोन एति की 4 बिलियन IP एड्रेस ओनली हमें पाउचे बट हमें जदि 1 टू द पावर सॉरी 2 टू द पावर 128 कैलकुलेट करिवा तो हमरा आसुची केते 340 on decillion माने 340 on decillion is almost like it can cover the entire earth okay so IPv4 has a large number of reserved IP address जोड़ा की कराउची तो आर नेमिंग कन्वेंशन रोची कम्युनिकेशन टाइप रोची how does IPv6 improve on IPv4 पूरा डिटेल्स रे देखो पूरा डिटेल्स रे व्हाट इज IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड वर्जन 6 पूरा डिटेल्स रे वो देइची तो मु कभी बेटर जस्ट तमे just document ता फॉलो करो IPv6 डिफरेंस बिटवीन द IPv4 IPv6 हाउ सब बळे अमेजन रो डॉक्यूमेंटेशंस देखो राइट राइट सो नेक्स्ट कोन आछि ओके हमें IPv4 ऊपर टिके जस्ट आईडिया पाइले सबनेट IPv4 ओके सो ऑटो असाइन पब्लिक IP जोटा कि हमें कहू ऑटो असाइन पब्लिक IP
सो ऑटो असाइन पब्लिक आईपी जो आम यूज करूटा पब्लिक आईपी विषय जस्ट आम कथा IPv4 तो AWS रे कोन होची ना जो आईपी एड्रेस दोची सेटा होची पब्लिक आईपी सेटा डायनामिक माने चेंज हो तो आम जिते गोटे मशीन को स्टॉप करदे इंस्टांस को स्टॉप करवा तो नेक्स्ट जो रिस्टार्ट करवा से कौन कर नुआ आईपी एड्रेस गोटे दब तो से हिसाब से ऑटो असाइन इनेबल कर डिजेबल करदेवी तो कौन हम ना से आईपी एड्रेस मत दबनी माने कौन पब्लिक आईपी एड्रेस दबनी बट प्राइवेट आईपी एड्रेस इज कांस्टेंट इज स्टैटिक दैट आईपी एड्रेस विल गेट बट पब्लिक आईपी एड्रेस हम पाइबानी जदि हम पब्लिक आईपी एड्रेस न पाइबा तले कौन करबा जदि हम न पाइबा हमें तो कौन करिया थ्रू इंटरनेट आम जो सर्वर क्रिएट करिया कनेक्ट करि परिबा कारण हम पाखे पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं हम पाखे पब्लिक एड्रेस नहीं हम जोटा जाई कनेक्ट करि परिबा तो प्राइवेट एड्रेस रे के कनेक्ट करि परिबो जो भी यूजर की जो सर्विस प्राइवेट टू दैट सर्वर ओनली माने जे कोन से गोटे सेम नेटवर्क रे धर तमर आम घर माने गोटे रूम रे धर सपोज गोटे रूम रे गोटे फैमिली रोज तो फैमिली ऑल आर प्राइवेट ऑल आर नो नोन टू ईच अदर तो सेमान को एक्सेस पाई किसी लाइसेंस की किसी दरकार नहीं किसी एड्रेस दरकार नहीं सेमान एड्रेस जानि छथि आस करियो बट तुमको गोटे फ्रेंड मीट करबा बस की गोटे अननोन पीपल वांट्स टू मीट यू तो तमे कौन दरकार था एड्रेस ही दबो तो एड्रेस से जानिनी तो से एड्रेस दबो एड्रेस सहित तमर गेट रे जो थिबो सिक्योरिटी ताकू जणेबो जे से आसुची कि ता पाखर गोटे की थिबो जे से की धरिकी आसीबो ओपन करिवो सेटा ही जोटा पब्लिकली एड्रेस जेटा कि तमे पब्लिकली एंटर करि परियो तो पब्लिक एड्रेस मु एठी डिसेबल करि पानी राइट मु चाहूची जदि डिसेबल करली दैट मींस नो वन कैन एंटर टू द एड्रेस एक्सेप्ट द प्राइवेट वन सपोज मु एनेबल कले माने मते गोटे आईपी एड्रेस मिल जिवो हला एनेबल तापर सिक्योरिटी ग्रुप विषय हम कथा आइतले लास्ट क्लास रे सिक्योरिटी ग्रुप गोटे सेट ऑफ फायरवॉल रूल माने तमे कोन एक्सेस दबा को चाहूचो माने तमे ए जो सर्वर टा क्रिएट करछो ए सर्वर को को टाइप रो एक्सेस दबो माने पब्लिक एक्सेस दबा चाहूचो कि प्राइवेट एक्सेस दबा चाहूचो कि को पर्टिकुलर आईपी एड्रेस केवल रीच करि परिबो को पर्टिकुलर पोर्ट रीच करि परिबो सही हिसाब रे तमे गोटे सिक्योरिटी ग्रुप करबो माने तमे पर्टिकुलर एड्रेस को ही तमे एक्सेस दबो जे सही एड्रेस केवल कनेक्ट करि परिबो तो वी कैन गो अहेड एंड create security group so security group कोचे security group is a set of firewall rules that control the traffic of your instance माने जो ट्रैफिक का इंटरनेट ट्रैफिक माने के कनेक्ट करछि के इन होछि के आउट होछि राइट माने तमे सही पर्टिकुलर सर्वर रो मशीन रो कोठी कनेक्ट करि पाउछो कि सही मशीन को के तुमको कनेक्ट करि पाउछि तो एंटायर डिटेल्स तमे देई परिबो राइट तो सिलेक्ट तो क्रिएट करियो तुम पाखे जदी सिक्योरिटी ग्रुप नाही ताले तमे क्रिएट करि परिबो गोटे जदी अछि देन सिलेक्ट एक्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप ओके so let me go ahead and create one security group create security group and give a name to the security group I will give a name as demo v12 गोटे नाम देली right तो descriptions तम हिसाब रे तमे descriptions देई परिबो कोन description तमे रखिबा को चाहूचो जदी तमे एटी पर्टिकुलर डेट आउ descriptions विषय दउ चाहूचो तमे देई परिबो नतु छाड़ दबो तापर आसी नेक्स्ट आसी इनबाउंड सिक्योरिटी ग्रुप ता तमे इनबाउंड सिक्योरिटी ग्रुप कोन दबा को चाहूचो बाय डिफॉल्ट रोची SSH राइट तो SSH कोन हमें लास्ट क्लास रे जानते SSH कोन पे यूज होची SSH माने कल तमे भी प्रैक्टिस कर देखो दलो राइट SSH माने कोन SSH it is actually a protocol right that कोन secure cell protocol okay SSH protocol so SSH protocol ro default port number है 22 default port number 22 तो SSH protocol तो protocol टा कोन हम जानि set of rules to be followed right तो SSH protocol जोटा हम यूज करछ आर रूल हिसाब रे हमें कनेक्ट करियो तो बटन फर्स्ट हमें कोन कहले ना व्हाट वी आर गोइंग टू डू
टाइप बाय डिफॉल्ट गोटे लाइनक्स मशीन रो डिफॉल्ट प्रोटोकॉल टा एसएसएच थिबो जदि मु एसएसएच प्रोटोकॉल टा देबिनी एटू रिमूव कर देबी तो कोन हो वी कैन नॉट कनेक्ट टू द सर्वर बिकॉज़ हम सर्वर को कनेक्ट कर परिबानी थ्रू एसएसएच ओके तो मु एटी एसएसएच देली तो प्रोटोकॉल टा कोन देजी टीसीपी तो प्रोटोकॉल विषय तो तुम जानिछ केते प्रकार प्रोटोकॉल अछि ओएसआई लेयर जानिछ नेटवर्क ले 7 लेयर्स राइट तो प्रोटोकॉल्स टा हमर केते प्रकार अछि बहुत प्रोटोकॉल अछि बहुत प्रोटोकॉल्स अछि राइट तो गोटे अछि जोटा कि टीसीपी जोटा अछि हमर कोन ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल राइट तो टीसीपी टा तो एसएसएच आसुची टीसीपी प्रोटोकॉल अंडर रे आर कैटेगरी हैला टीसीपी तो पोर्ट रेंज हैला 22 डिफॉल्ट पोर्ट हैला 22 सोर्स टाइप जदी कछि एनीवेयर माने anywhere in the world with this protocol, with these rules, this port number, anyone can access. Anyone can access, right? Anywhere. And here, source, CIDR. What is CIDR? Let me explain here. CIDR also calculations. Classless inter-domain routing. Meaning classless or class 9 classless inter-domain routing okay हमें this CIDR ऊपर बुझिबा classless inter-domain routing allows network routers to route data packets okay route data packets तो हमें बेसिकली जो आमे डाटा सब शेयर करूचे राइट तम मोबाइल द्वारा तमे व्हाट्सएप करछ गोटे सांग गति तो तमे हाय लिखि पठे तो से हाय टा जो जाउची कोन गोटे कोड रे जीवो बाइनरी कोड बा गोटे पैकेट टा डिलीवरी होबो तो वर्तमान आमे कोन सब वायरलेस यूज करूछ राइट थ्रू वायरलेस मीन थ्रू सिग्नल इट विल ट्रांसफर तो जेतो आमे ट्रांसफर करछ गोटे लेयर गोटे मीडियम थिबा दरकार जो मीडियम टा गोटे ट्रांसफर करिवो हमर डेटा को तो सेही डेटा को आमे यूज करिबा कोन से डेटा जोटा होउची गोटे पैकेट हिसाब रे जाउची 0101 देखि तो गोटे बाइनरी कोड हिसाब रे पैकेट सब मूव करूतो तो से जो पैकेट जो ट्रांसफर होउची गोटे तमर एटा कोन कहछि ना क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग अलाउज नेटवर्क राउटर्स टू राउट डेटा पैकेट्स टू द रेस्पेक्टिव डिवाइस बेस्ड ऑन द इंडिकेटेड सबनेट राइट बेस्ड ऑन द सबनेट रे route होची instead of classifying IP address based on classes routers retrieve the network and host address specified to the CIDR so CIDR block kono is a collection of IP addresses is a collection of IP addresses ऐसे CIDR notations देछि तमे just try करिवो CIDR विषय रे बुझेबो बट हमर जतबे VPC क्लास करिवा राइट VPC विषय रे पढिबा सो सेतबले हमें CIDR ऊपर मोर जानिबा और CIDR केमिति कैलकुलेट करा भी होउची तार गोटे CIDR कैलकुलेशन भी अछि हला दोमु देखे दोछि केमिति कोन CIDR कैलकुलेट करिवो CIDR कैलकुलेशंस माने ओके CIDR माने गोटे IP रेंज कोन गोटे एटाला गोटे सेट ऑफ IP एड्रेस रहउची तार कोन रेंज तमे पाइबो राइट सेटा सब केमिति कोन कैलकुलेट करिवो राइट CIDR calculator CIDR XYZ लगे एटा CIDR XYZ एतरे तमे एटा मन रखि दो CIDR.xyz एतरे कोन करबो ना तमे तमर IP एड्रेस तमे कैलकुलेट करि पारे तम को टाइप रो केते IP एड्रेस तुमको दरकार राइट तार कंप्लीटली तमे IP दर तमर अछि एटा कोन 28 बिट रो 28 बिट रो IP एड्रेस हले तो टोटल केतरा 16 टा IP एड्रेस हमको मिल परिबो जदि मु 28 रो देखिलु जदि मु एटा इंक्रीज कर दली 32 केवल गोटे कारण हमर ला 32 बिट रो राइट IP एड्रेस इज 32 बिट जदि टोटल 32 बिट पूरा नै जिम तले मते गोटे IP एड्रेस मिलियो तो 32 बिट का मिले जे पर्सनल IP मो कंप्यूटर गोटे अछि तो 32 बिट तो मु चाहूची मल्टीपल CIDR रेंज रो IP एड्रेस क्रिएट करी मल्टीपल IP एड्रेस मत दरकार तो मु सही हिसाब मते रिड्यूस करिया पड़े मु जर चाहूची 16 रखिबी 16 रखले हमने मते केते 65000
536 आईपी एड्रेस मिलियो 65,536 बट से 65,536 भितर तमे देखो फर्स्ट वन इज यूजेबल आईपी लास्ट वन इज 254 राइट एटा 254 आईपी लास्ट यूजेबल आईपी तो फर्स्ट नेट मास्क सीआईडीआर बेस आईपी ब्रॉडकास्ट आईपी तो ये जो काउंट दउची ता भितर चारिटा almost 4 to 5 address will be reserved by AWS मतलब एक्सप्लेन करिया बीपीसी रे तो पढिया तो एक्सप्लेन करबी कोटा कोटा रिजर्व आईपी एड्रेस रहउची ओके मते जे 16 दउची तले मते केते आईपी मिलची एते की तो मु तो 28 देबी 28 बिट रो तो मते मिलिबो 16 टा आईपी एड्रेस तो मु चाहूची मो कंपनी जो 16 टा मेंबर अछि से डिफरेंट 16 टा आईपी एड्रेस मते दरकार 16 टा डिवाइस पाए तो मु कोन करबी ना 16 टा डिवाइस पाए 16 टा आईपी एड्रेस बनाबी तो 28 बिट रो मु चाहबी जदी 8 बिट रो केते आसी 16,007 सॉरी नॉट 16,000 1 crore 60 राइट 1 crore बा 126 लक्ष राइट 167 lakhs एते आईपी एड्रेस मिलछ सही हिसाब रे तमे जते रिड्यूस करी करी चलिबो सेते हिसाब रे तुमके टोटल एक्चुअली 4 बिलियन आईपी एड्रेस मिलछ गोटे कैलकुलेटर तुम कैलकुलेट कर तो आम जो अधिका पढ़ा सीआईडीआर विषय रे जान क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग तार विषय रे जाक तार डिफरेंट क्लासेस रोचे हला आम जो कहले क्लासलेस राउटिंग राइट क्लासलेस और इंटर राउटिंग इंटर डोमेन राउटिंग क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग तार कौन कौन सब ब्लॉक्स रोची डिटेल्स रे पूरा टोटल कंप्लीटली तमे जदी नेटवर्किंग जानिया चाहू नेटवर्किंग दिबो बट एते किछि जानिबा नै बस जानिता हो जे सीआईडीआर ब्लॉक रो ओटे रेंज ऑफ आईपी एड्रेस ओटे रेंज ऑफ आईपी एड्रेस ओके नेक्स्ट गो अहेड एंड आईपी एड्रेस सिलेक्ट करे राइट तो वर्तमान मु एसएसएच देली एडी मन रखता मतलब नेक्स्ट क्लास माने नेक्स्ट मतलब करबी तार कोई आईपी कोई पोर्ट नंबर हमें अलाउ करिया राइट तो एठी वर्तमान मु अलाउ करछि को पोर्ट को एसएसएच को देन डिफॉल्ट स्टोरेज रहिला कोन 8 जीबी एई जो कॉन्फ़िगर स्टोरेज ता हमें कोन स्टोर करबा ए जो वॉल्यूम ता हमें ऐड करबा तो वॉल्यूम ता कोन अछि ईबीएस वॉल्यूम इलास्टिक ब्लॉक स्टोर वॉल्यूम तो एटी देखो जीपी3 अछि डिफरेंट टाइप तो जनरल पर्पस एसएसडी जनरल पर्पस एसएसडी जीपी2 जीपी3 प्रोविजनड आईओ एसएसडी प्रोविजन आईओ1 आईओ2 कोल्ड एसडीडी ए रीजन पाई पर्टिकुलर कोल्ड एसडीडी नाही डिजेबल अछि थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड भी नाही डिजेबल अछि मैग्नेटिक स्टैंडर्ड अवेलेबल अछि राइट जोडा कि हम ईबीएस रे वॉल्यूम रे पढिला तो एटा हमर कोन रूट वॉल्यूम नॉट एनक्रिप्टेड रूट वॉल्यूम बाय डिफॉल्ट रूट वॉल्यूम क्वेश्चन भी आसी परियो तो तमे सर्टिफिकेशन भी दोचो कि इंटरव्यू तो पचारि पारंती यदि केवल पर्टिकुलरली क्लाउड इंटरव्यू दोचो तो पचारि पारंती रूट वॉल्यूम एक्चुअली नॉट एनक्रिप्टेड ओके so it will लिखी दोचे free tier eligible customers can get up to 30 GB of EBS 30 GB of EBS can get it so 8 GB पाई गले next advanced details हमें advanced details रे फाइबर domain join directories okay advanced details रे देखो देखा कौन कौन advanced details रे अछि IAM instance profile तमे किछि प्रोफाइल क्रिएट करछ IAM instance रे you can go ahead and select गोटे रोल सिलेक्ट करिवो तमे किसी रोल दोउछ राइट दरकार नै वर्तमान छाड़ दियो इंस्टेंस ऑटो रिकवरी माने ऑटोमेटिकली यदि इंस्टेंस फेल्योर हैला किछि डाटा लॉस हो तमे रिकवरी करिया पे सिलेक्ट करछ डिफॉल्ट रखिवो जोटा कि एनेबल हे कि रहइबो राइट मु एनेबल कनी किछि सर्विस ऑप्शन अछि जोटा कि पैसा पडिबो राइट तो देखो तमे फर्स्ट जतबेले सर्विस यूज करूछ AWS रे सब बेले बी कैलकुलेटिव राइट सब बेले कैलकुलेशंस रहउथो जे मते 30 जीबी रो 30 जीबी रो वॉल्यूम लेले फ्री रहउची तार जदि मु अधिका नउची तले कोन हो धर मु 35 जीबी लेली तो केते से पकेबा हम 30 जीबी फ्री देला आ 5 जीबी पेमेंट करे पड़ो चार्जेबल रहइबो तो सही हिसाब रे तापर दोची 750 आवर्स कोन फ्री बट मु जदि मोर देन 750 आवर्स देली तले मते चार्ज पड़िबो बदी गोटे मशीन
constantly 30 GB रो मु चलाउची 1 year तमने मते किछि पेमेंट करबा को पड़िबी गोटे T2 माइक्रो अप टू 30 GB until 750 hours free जदि मुझे आउ गोटे मशीन क्रिएट करि देली सेम मशीन 30 GB रहला आ गोटे मशीन सरा 8 GB रहला तो मते 8 GB रो पेमेंट करिया पड़िबो प्लस 7 दीटा मशीन चलला माने 750 into 750 आ गोटे 750 फ्री द रेस्ट 750 हैव टू पे ओके तो सेटा कैलकुलेट करिया पड़ियो तो ऑटो रिकवरी तमे सही हिसाब से सिलेक्ट करियो शटडाउन बिहेवियर तो माने सिस्टम शटडाउन कले कोन करबा चाहौ आइदर यू वांट टू शट डाउन इट और टर्मिनेट इट शटडाउन बिहेवियर लेट इट बी स्टॉप हाइबरनेट बिहेवियर टर्मिनेशन प्रोटेक्शन तो टर्मिनेशन प्रोटेक्शन ता एनेबल करले माने कोन तमे मशीन एक्सीडेंटली बाय चांस तमे डिलीट कर डिलीट बटन क्लिक कर दे राइट तो एटा डिलीट हबन तो एटा कोन ना टर्मिनेशन प्रोटेक्शन को तमे ऑन करियो एनेबल ओके तो एनेबल कला माने से आउ टर्मिनेट हबन तापर तमे चाहिबो ताकू टर्मिनेट करिया पे फर्स्ट यू हैव टू डिसेबल इट देन टर्मिनेट ओके नेक्स्ट स्टॉप प्रोटेक्शन एनेबल तो माने स्टॉप भी कई करि पारे टर्मिनेशन प्रोटेक्शन स्टॉप प्रोटेक्शन तो माने मशीन ता दरो तमरो ओटे रन होउची बाय चांस जदि किछि को एडमिन की कोनसी यूजर गोटे यूज करू बाय चांस स्टॉप रे क्लिक हेगला तो मशीन कोन स्टॉप हे जो तो हमें चाहूची त मशीन स्टॉप न हो कारण जदि किछि एप्लीकेशन क्रिटिकल एप्लीकेशन की कस्टमर यूज करूची तो हमें स्टॉप हेगला तो कस्टमर इंपैक्ट हबो क्रिटिकल एप्लीकेशन इंपैक्ट हबो तो सेति पे हमें तक प्रोटेक्ट करबा जे शुड नॉट बी स्टॉप ओके तो तमे एनेबल कर दो एनेबल क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग हमें क्लाउड वॉच सिखला बले क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग माने तमरो जा जा सब सर्विस कंपोनेंट्स अछि मॉनिटर करिया पे क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग अछि क्रेडिट स्पेसिफिकेशंस केते कोन क्रेडिट अनलिमिटेड तमे यदि यूज करिया पे चाहौ अनलिमिटेड सिलेक्ट कर परिबो स्टैंडर्ड जति दरकार सति यूज करबो प्लेसमेंट ग्रुप इज मोरली यूज फॉर द क्लस्टर ग्रुप को ग्रुप रे तमे आकु प्लेस करबा को चाहौ गोटे नेटवर्क रे को ग्रुप रे तमे प्लेस करबा पे चाहौ सिलेक्ट प्लेसमेंट तो EBS ऑप्टिमाइज्ड डिफॉल्ट डिसेबल्ड ही रहउची परचेज ऑप्शन तमे स्पॉट इंस्टेंस किनिबा को चाहौ जोडा बुझले स्पॉट इंस्टेंस सिलेक्ट तो तार प्राइस कोन कोन अछि स्पॉट इंस्टेंस से हिसाब तुमको प्राइस अछि पते बर्तन नॉन अछि नॉन नहीं कैपेसिटी रिजर्वेशन तमे रिजर्व करिया चाहौ छी रिजर्व कर परिबो टेनेंसी सिलेक्ट करिया पे चाहौ केते से ऐड करिया पे सिलेक्ट कर परिबो RAM डिस्क भी को डिस्क स्पेसिफिक RAM डिस्क नवा चाहौ सिलेक्ट कर परिबो कर्नल आईडी सिलेक्ट कर परिबो राइट बट बाय डिफॉल्ट जोटा कि तमर डिफॉल्ट डिस्क जोटा कि हमें वॉल्यूम सिलेक्ट कले से वॉल्यूम रो डिफॉल्ट डिस्क नबो और सेटा कर्नल आईडी से ऑपरेटिंग सिस्टम रो कर्नल आईडी नबो डिफॉल्ट राइट तो यार को कर्नल आईडी नबो Amazon लिनक्स रो कारण हमें Amazon लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करि छै राइट डन ओके मेटाडाटा सेक्शन डन मेटाडाटा लीव इट यूजर डेटा सेक्शंस हमें नेक्स्ट क्लास रे यूजर डेटा सेक्शन एंड लॉन्च टेम्पलेट गोटे नेक्स्ट सेक्शन रे हमें पढिबा नेक्स्ट क्लास रे समरी कोन कोन हमें चूज कले नंबर ऑफ इंस्टेंस 1 डन then go ahead and launch instance so successfully initiated launch so let's go ahead and check view all instances okay already दुईटा इंस्टेंस अछि माने दुईटा वर्चुअल मशीन अछि गोटे मशीन मु ऑलरेडी क्रिएट करथली हम पर्टिकुलर काम पई ता गोटे वर्तमान मन डेमो पई गोटे डेमो सर्वर V12 गोटे वर्चुअल मशीन बाय इंस्टेंस क्रिएट करनी तो ए जो वर्चुअल मशीन हमें सबले कहछो तो एठी के हम कहबा कोन इंस्टेंस गोटे इंस्टेंस मु क्रिएट करली राइट टाइप ऑटोमेटिक केम क्रिएट हला हमें सिलेक्ट करले ना हमें तो सॉफ्टवेयर AMI सिलेक्ट कर साला पर तो इंस्टेंस टाइप सिलेक्ट करले ना T2 माइक्रो जोटा कि हमें फ्री टियर थिला T2 माइक्रो तो जहां भी एठी सब हेला देखो इंस्टेंस आईडी टा ऑटोमेटिकली दैट इज यूनिक आईडी ऑटोमेटिक क्रिएट हबो T2 हमें सिलेक्ट करले राइट अवेलेबिलिटी जोन टा से ऑटोमेटिक नेला हमें किसी सिलेक्ट करी ने को सबनेट रे रन हबो राइट से ऑटोमेटिक नेला तो सही सब रे पब्लिक डोमेन से ऑटोमेटिक क्रिएट कला पब्लिक आईपी भी से क्रिएट कला हमें किसी स्पेसिफिक पब्लिक आईपी देई ऑटोमेटिकली से क्रिएट कला राइट तो मुझे आगुरु कहि जे पब्लिक आईपी टा कोन
AWS रे गोटे क्वेश्चन पचार जदि आम सर्वर ऑफ कर दवा आउ थे स्टार्ट करिया पब्लिक आईपी कोन हो अच्छा चेंज हो कहीं ना एटा डायनामिक तो AWS रे पब्लिक एटा हला डायनामिक तो तमे जतबे जदि कोनसे तमे सर्वर रिस्टार्ट करूछ माने तम पब्लिक आईपी टा चेंज हो बट प्राइवेट आईपी कोन रहइबो कांस्टेंट सेटा स्टैटिक हला गोटे सर्वर एड्रेस टा कांस्टेंट रहइबो राइट हम सर्वर बर्तन फर्स्ट रन हे गलान टोटली स्टार्ट हे गलान तो इट्स रनिंग नाउ हम कोन करे आईपी एड्रेस नबा then what we are going to do just open your putty session right putty open kariba तो putty रे first हमें कौन करबा ना जी पछे जो host name आउ IP address ପାଇଁ right तो putty installations हमें already देखि छे केमती कोन putty installations करिबा तो host name आउ IP address we can get the host name and IP address तो just host name IP address देले तापर कौन करिबा ना जति तमे ए सेशन टा पर्टिकुलर सेव करिबा ପାଇଁ चाहूचो then you can do go here and just write demo suppose v12 and I gote mu deli session right v12 how save it save gala demo v12 save gala ip address save gala but ame खाली ip address वर्तमान देले सर्वर ने तर हम गोटे दरकार की कनेक्ट करिया ପାଇଁ तो की केमती दवा ना ssh को जिबा ऑथेंटिकेशन रे क्रेडेंशियल्स रे हमें जो कीटा जनरेट करिचे से कीटा वर्तमान हमें प्रोवाइड करिबा सपोज आई क्रिएटेड डेमो B12 right done then create हे गला रे सपोज एटा बहुत शॉर्ट फॉर्म रे अछि तो मु आपको माने फॉन्ट छोटो अछि तो मते फॉन्ट इंक्रीज करिया पे तमे कोन करियो ना अपीयरेंस को जीवो अपीयरेंस को चेंज तो फॉन्ट सपोज 16 ओके हे गला परे नेक्स्ट गो टू सेशन आउ तेरे ताको सेव कर दियो जो B12 देचे एटा आउ तेरे ताको सेव कर दो सेव कर दला माने जहा जहा सब चेंजेस हमें कले राइट जहा जहा सब चेंजेस कले सब जगह सेव हेगा right now open login आज तो फर्स्ट ओपन कला माने एक्सेप्ट मै ऑलरेडी मु ओपन करे करि सारछि सेति में आ एक्सेप्ट मागिलानी माने से जो कीटा एक्सेप्ट करिया पई तो लॉगिन आज तो को मशीन हमें नहीं छे Amazon लिनक्स नहीं छे बट Amazon लिनक्स मशीन तो Amazon लिनक्स रो डिफॉल्ट यूजर आईडी हला ec2-user see now I am able to connect to the machine okay बर्तमान मु तुम कोन कहला Amazon Linux रो डिफॉल्ट हला कोन ec2 user Amazon Linux रो डिफॉल्ट यूजर आईडी हला ec2-user for Amazon Linux okay समथि Ubuntu default user for Ubuntu Linux okay CentOS for CentOS Linux CentOS or Red Hat okay Red Hat Linux ପାଇଁ तो ये सब डिफॉल्ट यूजर मन रख दो इस जदि तमे Amazon Linux machine नौचो then default user तमे यूज करिवो ec2-user जदि Ubuntu Linux machine create करछो then you have to create Ubuntu machine जदि CentOS or Red Hat Linux create करछो then you should go with user id CentOS default user है CentOS बुझी पारलो राइट तो CentOS now हमें कौन कले ना सर्वर को लॉगिन करछे तो एटा हमर लिनक्स सर्वर रे लिनक्स कमांड मु जेमि कहै छै हमर ई क्लास रे हमें कोन करियो जब सर्वर क्रिएशंस पर हमें लिनक्स सिखिबा लिनक्स केमति कोन कमांड यूज होछि और शेल स्क्रिप्टिंग सब लिनक्स रो सब जगह यूज हो लिनक्स कमांड लिनक्स और शेल स्क्रिप्टिंग सब हमें सिखबा वन बाय अनदर राइट तो हमें वर्तमान दुईटा सर्विस करछे S3 आउ IAM सॉरी छि EC2 इंस्टेंस रे जति कि सर्वर क्रिएशंस बतै देबी जेमति कि कहली EC2 रे बहुत किछि अछि राइट बर्तमान EC2 डैशबोर्ड जतो हमें फर्स्ट आसिले तो डैशबोर्ड रे किछि हमें ए सब माने रिसोर्सेस डिटेल्स देखले ता सहित भी हमें देखिबा जे इस आर लेफ्ट हैंड साइड रे बहुत सारा फीचर्स दैछि जोटी कि इंस्टेंसेस रे इंस्टेंस टाइप तमे एठी देखि परिबो तमे जो प्राइसिंग कैलकुलेट कथा मु कहउतली राइट तमे इंस्टेंस टाइप एठी सिलेक्ट करिवो तो इंस्टेंस टाइप रे तमको कोन टाइप रो सब केते केते प्राइस सब अछि राइट तो पर्टिकुलर मध्ये T2 माइक्रो रो नौची तार प्राइस कोन आवरली बेसिस 0.124
से टाइप रो मुझे हाई कॉन्फ़िगरेशंस रो किछि भी नौची तो सपोज C5A8X लार्ज 32 रो जदि मु नौची CPU मेमोरी नौची 64 से हिसाब रे तार प्राइस देखो लिनक्स प्राइस है 0.752 पर आवर जोटी 0.752 लिनक्स आवर सेठी तार 3 डबल होची 3 रु 4 डबल होची विंडोज प्राइस था विंडोज मशीन ता 2.224 USD पर आवर सब आवरली बेसिस से चार्ज करथु हला लिनक्स प्राइस ता कम अछि विंडोज प्राइस सब बळे हाई राइट गला से हिसाब रे तमे इंस्टेंस टाइप तो हमर इंस्टेंस कैटेगरी भितरे डेडिकेटेड होस्ट सेविंग प्लान है सेविंग प्लान्स कोन दरकार है रिजर्व्ड इंस्टेंसेस सब डिटेल्स पाइ जो लॉन्च टेम्पलेट आ भितर में आ विषय हम पढिबा नेक्स्ट तो EC2 ही केवल हमको 2 to 3 वीक्स टाइम लागो केवल जेति सब EC2 रे फीचर्स अछि सब जानिबा तो बेसिक वर्तमान मु तुमको खाली लाइनक्स मशीन स्टेशंस विंडोज मशीन क्रिएशंस भितर बतै दोछि हला इंस्टेंस तापर इमेज सेक्शन से हमें देखिले इमेज कोन कोन हमें इमेज निजर भी इमेज गोटे क्रिएट करबा केमति ता विषय में बतै देबी देन आसीबो इलास्टिक ब्लॉक स्टोर हमर लास्ट क्लास इलास्टिक ब्लॉक स्टोर ऊपर पढी देले माने कोन गोटे वॉल्यूम डिस्क को अटैच करिया पय डिस्क को क्रिएट करिया पय EBS ता कोन EBS सेक्शन वॉल्यूम तार स्नैपशॉट केमति क्रिएट करबा विषय जानिबा नेटवर्किंग नेटवर्क एंड सिक्योरिटी हम सिक्योरिटी ग्रुप विषय रे ऑलरेडी जानि छे सिक्योरिटी ग्रुप कोन फायरवॉल रूल्स ता केमति सेटअप करिया सब जानि लेनी आ नेक्स्ट हमें जते भी मशीन क्रिएट करबा सब टाइप सिक्योरिटी ग्रुप विषय रे आईडिया पाइबा इलास्टिक आईपी विषय जानिबा आ की पेयर्स ऑलरेडी हमें जानि सारनी नेटवर्क इंटरफेस हमें सिखिबा जतो बीपीसी पढिबा नेटवर्क ऊपर अधिक जानिबा तपर लोड बैलेंसिंग गोटे फीचर आ गोटे सर्विस कहयो गले चलिबो ALB आ गोटे अछि ऑटो स्केलिंग गोटे सर्विस ये सब EC2 भीतर ये सब जगह अछि कि हमें धीरे धीरे टाइम लागियो तो वन आफ्टर अनदर स्लोली हमें मूव करिबा राइट ओके तो हमें वर्तमान गोटे हमर मशीन हमें क्रिएट कर दैछे तो मशीन लॉगिन करिछे लेट्स गो टू दैट मशीन देखो देखा जीवा पता ठीक अछि तो क्लियर गोटे कमांड लाइनक्स रे जोटा कि हमें यूज कर स्क्रीन क्लियर करिया को लिखि दी तभी जमन रे तुम वीडियो देखि तो जानि भी पारिबो तो क्लियर कमांड इज यूज्ड टू क्लियर द स्क्रीन राइट तमरो जो कंसोल टा यूज करू स्क्रीन तो हमें लाइनक्स सेटा जेमति हमें विंडोज रे यूज करिया केवल एठी हवन तो हमें विंडोज रे CLSR जोटा यूज करछु केवल विंडोज तो एठी तमे क्लियर लिखिबो क्लियर करिया स्क्रीन तो हमें जदी क्लियर स्क्रीन करछु कंप्लीटली हमें डिटेल्स रे यूनिक्स लाइनक्स शिखिबा लाइनक्स टा कोन राइट तार कोन कोन सब अछि बास कस माने कोन सब एनवायरनमेंट अछि को टाइप रो लाइनक्स एनवायरनमेंट सब डिटेल्स रे शिखिबा वर्तमान जो कमांड अछि से धीरे धीरे जानता हो हैला क्लियर कर देली तो फर्स्ट हमें कोन करियो ना गोटे मशीन हमें क्रिएट कर देले तो मु वर्तमान तुमको गोटे सर्वर इंस्टॉलेशन सिखेली हैला तो फर्स्ट करि करा PWD माने अछि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को करंट डायरेक्टरी तमे अछो तो मु बेसिक खाली लाइनक्स कमांड पहुची तो हम लाइनक्स कमांड पढे एगरा सब आउतरे रिकवरी करिया आउतरे रीयूज करिया राइट तो फर्स्ट कोन करबा ना तमे गोटे सुडो सुडो हला सुपर यूजर डू माने रूट यूजर तमे गोटे सुपर एडमिन सुपर यूजर हिसाब रे तमे गोटे इंस्टॉल करबा तो मु गोटे इंस्टॉल करिया को चाहूची सर गोटे अपाची सर्वर है अपाची सर्वर तो अपाची सर्वर कोन व्हाट इज द अपाची सर्वर Apache by HTTP server. I'm going to install one of the Apache server. Okay, that's called HTTPD server. I'm going to install. So what is this? This is Apache server. HTTPD server is one of the application server. Application server where you can HTTPD. The server name is HTTPD. Okay, Apache name. This is the applications. HTTPD is the application which we are going to install in Linux. Okay, application server where you can host your web server, web applications. Where you can host your web applications. Okay, where you can host your web application. Now, host web applications. Then what we have to do? To do this, what we have to do first, we have to install the applications, right? The Apache server विषय तुम बेसी जानिबे बेले just search for the Apache HTTPD
HTTP server. Okay, actually Apache HTTP এটা হলো Apache HTTP server, Apache HTTP server. Okay, HTTP server, but the application name is HTTPD. Whenever we are going to use, we have to install HTTPD, but the server name is Apache HTTP server. Okay, so the Apache HTTP server, so कौन कहूँ ना, the Apache HTTP server is a free and open source cross platform web server software, cross platform web server software. तो તમે सब कौन करबो, वेब एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन व प्रोडक्ट તમે ચાહો છો હોસ્ટ કરવા ପାଇଁ તમે Apache server રે यूज કરીପାରିବ. Apache ସେମିତି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର NGINX, এটা ବି ଗୋଟେ HTTP server, NGINX এটা ବି ଗୋଟେ application HTTP server. ओके, NGINX. तो आमे बर्तमान Apache server पर देखियो, तो install HTTPD. ओके, sudo install HTTPD. तो HTTP the package name, that is the application जेतो आमे install करिबा ए package नाटा पे ही आमे install करिबा HTTPD. This is the Apache package name, Linux package name, Linux package name. Where to install this package? Okay. Okay. So we will use sudo install HTTPD. It says operand after HTTP missing. That means we have to use the package manager to install it. Without the package manager, you cannot install. So what is a package manager? To manage the packages in the operating system, right? So in Amazon Linux, the package manager name is yum. Sudo yum install HTTPD. So Ubuntu the package manager na hala kana apt, or we can see yum package manager. This is a Linux package manager, right? Linux package manager. Package manager. So what we can do here? Coco machine ପାଇଁ ଏଟା ୟୁଜ ହଉଛି କୋଉ Linux machine ରେ, Amazon Linux ରେ ହବ, Amazon Linux, CentOS, Red Hat, right? तो ये सब रो yum package manager यूजर. ओके, तो आउट पैकेज मैनेजर चंती के हमर अछि apt, or you can say apt-get, apt or apt-get. This package manager being used for Ubuntu. For Ubuntu Linux, we are going to use apt or apt-get, apt-get or apt. Okay, apt-get or apt-get or apt. Okay, for Ubuntu Linux. So तामे कौन करियो ना, एठी आमे पैकेज मैनेजर कौन यूज करिवा, sudo yum install HTTPD. Hit enter. See, it's going to install. These are the install dependencies. एही गोटे पैकेज इंस्टॉल करछि HTTPD, ता सहित ए सब डिपेंडेंसी इंस्टॉल होछि, right? तो select yes. Done. Now our Apache server is installed. Apache server is installed. तो आमे कौन करिवा ना, Apache server जो इंस्टॉल हे गला, तो आमे कौन करे चेक करिवा whether install software install तो हे गला Apache server, right? package. तो आमे कौन करे चेक करिया status run होछि ना नाही, गोटे एटा कोन वेब सर्वर गोटे एटा रन होछि ना नाही चेक करिवा. तो ता कमांड होछि गोटे सिस्टम कमांड यूज करिवा, system ctl, okay, status package name HTTPD, service name HTTPD, system ctl status HTTPD. तो हमें चेक करिबा. तो एठी कोन कहूची ना, inactive माने रन होनी, it is inactive. ओके, तो हमें आकु रन करिबा. तो रन करिया पे कोन कमांड यूज करिबा, system ctl start
and httpd the service name, right? जो सर्विस टा हमें स्टार्ट करूचे सिस्टम ctl start httpd started. सो एठी कोन कहला ना परमिशन डिनाइड कोन पाई पड़िला देखाउची परमिशन एक्सेस डिनाइड कोची तमने एक्सेस नाही त हमें कोन करिया को पुनी यूज करिया सुपर यूजर वर्तमान मु नॉर्मल यूजर रे लॉगिन कली राइट सिस्टम ctl start httpd तो नॉर्मल यूजर यूज करछि तो हमें कोन करबा सुपर यूजर यूज करबा sudo system ctl start httpd ओके तो सुपर यूजर ओके नाउ स्टार्टेड तो मु कोन करिवे स्टेटस चेक करिवा सी बटन कोन करछि it's running now right it's now running तो हमर सर्वर रन हैला बर्तमान it's running now जेतु एटा वेब सर्वर तो केमती हमें एक्सेस करबा को वर्चुअली तो इंटरनेट एक्सेस करबा बट केमती वेब सर्वर हमें नॉर्मली वेब सर्वर को एक्सेस करू थ्रू exactly through web browser. Web server means we need the web browser to access it. For that we need http protocol. http is a protocol, right? The full form कौन http रो text hyper text transfer protocol hyper text transfer protocol okay http so we need http protocol to be active then we need the browser to connect तो ता पई जदी हमें सर्वर है ता पे हमें कोन दरकार तारा आईपी एड्रेस दरकार कनेक्ट करिया पे राइट तो हमें जीवा हमरो सर्वर को जो सर्वर ता हमर रन होची डेमो सर्वर राइट तारा आईपी एड्रेस आनिबा आ गोडेला अपाची सर्वर रो पोर्ट नंबर हैला कोन 80 डिफॉल्ट पोर्ट ऑफ अपाची सर्वर इज default port of Apache server is 80 okay default port Apache server default port hela 80 okay Apache http server Apache http server default port hela 80 तो हमको 80 पोर्ट दरकार कनेक्ट करिया पई राइट तो मु बर्तमान कोन कली ना से आईपी एड्रेस ता कॉपी कली लेट्स गो हियर पुट इट बाय डिफॉल्ट हमें स्पेसिफाई करि परिबा :80 कल कल नले नॉर्मली डिफॉल्ट पोर्ट जदी तमे न भी करछ डिफॉल्ट बाय 80 से नबो राइट तो हमें आईपी एड्रेस देले हिट एंटर जेतु हमर सर्वर वेब सर्वर कोन रन होची हमें वेब ब्राउज़र एक्सेस करि परिबा थ्रू आईपी एड्रेस बट डोमेन नेम रे बट एटा कनेक्ट still it is moving it's not let's see why and you have to tell me why it's not connecting just think already both are concept why it's not connecting what is said it says the site cannot be reached right तो हमें सर्वर को कनेक्ट एटा हमें सर्वर को कनेक्ट करूचे राइट through browser we are trying to connect to the server right through web browser right ए आईपी एड्रेस हमें देले तो हमें जतबे सही आईपी एड्रेस दोचे कोडी पुटी रे through SSH we can able to connect तो हमें SSH रे कनेक्ट कले तो SSH रो पोर्ट ता हमें कोन करछ सिक्योरिटी ग्रुप रो व्हाइट लिस्ट करिछ ऑलरेडी firewall access दिया हिच right security group रो we already have given the access to port number 22 but http रो पोर्ट नंबर केते 80 को हमें firewall देइछि कि नहीं सिंपल तो firewall access नहीं सेति पे access denied कहूछि साइट कनेक्ट ही पाउनी ना तो हमें http प्रोटोकॉल द्वारा सर्वर को कनेक्ट करि पारु नहीं तो हमको दरकार कोन से पोर्ट टा एक्टिव करिया पे 80 पोर्ट जो पोर्ट एक्चुअली पोर्ट कोन गोटे what is a port what is a computer port or ports in networking in computer networking a port number is a number assigned to uniquely identified connection endpoint
and to direct data to a specific service तो आमे तले गोटे पोर्ट यूज करूचे जेम कोन कहला एंड पॉइंट कोन गोटे सर्वर को आमे कनेक्ट करूचे गोटे सर्वर को आमे कनेक्ट करियो तो गोटे सर्वर एंड पॉइंट आमे देखियो गोटे राउटर यूज करछे राउटर पर्टिकुलर पोर्ट रहिता लाइन पोर्ट वन पोर्ट सब राइट तो सेटा ला गोटे एंड पॉइंट नेटवर्क एंड पॉइंट सो पोर्ट इज नथिंग बट ए network end point network end point through which we can connect to the respective network or service right तो एटी कौन है ना हमें पोर्ट 22 को व्हाइट लिस्ट करिचे तो थ्रू 22 हमें कनेक्ट करि पाउचे सक्सेसफुली बट 80 रे कनेक्ट कला बेलू को हमको एक्सेस नहीं सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ हमें कौन करिया पड़तन we have to provide access to port number 80 तो केमिति कोठी access दवा प्रोवाइड करिया हमें जीवा सिक्योरिटी ग्रुप को राइट सो लेट्स गो टू द सिक्योरिटी ग्रुप ऑफ दैट सर्वर तो केमिति जीवा हमें जो सर्वर को हमें देखिबा ई सर्वर रे ई सर्वर हमें सिलेक्ट करछे तो ई सर्वर जते हमें देखु छे राइट हमें ई सर्वर तो क्रिएट कर देले फर्स्ट हमें द डिटेल्स को जीवा सिलेक्ट कला पर डिटेल्स रे आसुची कोन हमर let me first explain all these details then the security group ऊपर बताएंगे right तो ये डिटेल्स रे हमें सिक्योर इंस्टेंस आईडी देखले इंस्टेंस आईडी ऑटो जनरेटेड एडाला यूनिक आईडी पर्टिकुलर सब इंस्टेंस रे गोटे गोटे आईडी रहबो यूनिक आईडी रहबो तापर रहबो पब्लिक आईपी जनरेट करबो एडी प्राइवेट आईपी हमें पाउचे राइट तापर पब्लिक डीएनएस प्राइवेट डीएनएस होस्ट नेम सब रहिला बीपीसी आईडी बीपीसी ता हमर जो नेटवर्क सब अकाउंट तुम जो क्रिएट करछे तो अकाउंट क्रिएट करबो AWS रे तुमको गोटे बीपीसी बा वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड जो नेटवर्क गोटे असाइन हो जो डिफॉल्ट नेटवर्क राइट तो हमें गोटे सबनेट आईडी माने जोटा कि हमर अवेलेबिलिटी जोन को अवेलेबिलिटी जोन रे रहिले ता डिटेल्स कंप्लीट कोन हम इंस्टेंस डिटेल्स भीतर पाइले को ईएमआई यूज है ईएमआई आईडी माने को ओएस ता ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करछे ता डिटेल्स हम एडी पाई परिबा तमे गोटे सिस्टम विषय जानिबा चाहछो कोन कोन तार कॉन्फ़िगरेशंस यूज हेछि मशीन तो तमे डिटेल्स से कंप्लीटली पाई जिवो राइट तो प्लेटफॉर्म कोन ऑपरेटिंग सिस्टम्स अमेजन लिनक्स सब एएमआई नेम एटा राइट तार मशीन तो को की यूज हेछि की पेयर डेमो v12 यूज हेछि की पेयर राइट कंप्लीट डिटेल्स तमे डी पाई गलो राइट सैला पर तापर स्टेटस ऑफ अलार्म मार स्टेटस ता कोन चालू ची कि चालू नहीं कौन प्रॉब्लम अछि कंप्लीट स्टेटस ऑफ अलार्म कंप्लीट मैट्रिक्स ला तमरो स्टेटस चेक राइट सब तमे आदर पाई पानी राइट स्टेटस ऑफ अलार्म देन मॉनिटरिंग सिस्टम मॉनिटरिंग रे हम कोन देखियो सीपीयू यूटिलाइजेशन केते हेची नेटवर्किंग मॉनिटरिंग सब कंप्लीटली तमे चेक कर पाबो मॉनिटरिंग पार्ट देन कम्स सिक्योरिटी पार्ट ये सिक्योरिटी पार्ट रे तमे कोन आईएम रोल सिक्योर आईएम सेटअप को रोल सेटअप करछो ओनर आईडी आउ सिक्योरिटी ग्रुप को सिक्योरिटी ग्रुप ता को अटैच हिच राइट हमें सिक्योरिटी ग्रुप पाई करी तो हम सिक्योरिटी ग्रुप ना हला कोन डेमो v12 राइट तो एटी सिक्योरिटी ग्रुप हम पाइले ताको एटी सिक्योरिटी ग्रुप रो इनबाउंड रूल अछि 22 एक्सेस करछि ता विषय सिक्योरिटी ग्रुप विषय बुझिबा देन नेटवर्किंग कोन नेटवर्किंग आर पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी सब डिटेल्स रहबो बीपीसी सबनेट अवेलेबिलिटी जोन सबनेट आईडी राइट कंप्लीट डिटेल्स हमें पाइबा राइट ता सहित हमें पाइबा स्टोरेज जो हमर वॉल्यूम ता EBS स्टोरेज ता राइट ब्लॉक स्टोरेज ता कोन कोन केते वॉल्यूम अछि कोन ब्लॉक वॉल्यूम आईडी राइट सब डिटेल्स हमें आदरे पाई पारे एवरेज लोड केते अछि वॉल्यूम रो कंप्लीट डिटेल्स हमें पाई पारे राइट मिली गला राइट ऑल द डिटेल्स हमें सब डिटेल्स हमें एठु ही पाई परिबो तो एठु हमें पाई गला परे हमें कोन करिबा मूव करिबा ओके कंप्लीट डिटेल्स टैग रे माने ता ना को नाच डेमो सर्वर किछ भी टैग तमे यूज करि पारिबो जोटा इजीली आइडेंटिफाई करिया तो मेटा टैग कोनती राइट गला तो हमें वर्तमान हमर फोकस करबा नाउ सिक्योरिटी ग्रुप ऊपर तो सिक्योरिटी ग्रुप रे तमे जानिबो केमती को सिक्योरिटी ग्रुप आपको ऐड हेछि राइट तो कोठी कि जिवो सिक्योरिटी टैब रु जाई करी सिक्योरिटी ग्रुप सेक्शन ने सिक्योरिटी ग्रुप नाटा पाइलो आइदर तमे डायरेक्टली एठी क्लिक करले से सिक्योरिटी ग्रुप ओपन हबो जदि तुम एठी डायरेक्ट न क्लिक करबो देखियो चाहू सिक्योरिटी ग्रुप हमरो इंस्टेंस रे सॉरी नेटवर्किंग रे राइट नेटवर्किंग और सिक्योरिटी ऑप्शन रे सिक्योरिटी ग्रुप अछि राइट सिक्योरिटी ग्रुप तो एठी हमरो सिक्योरिटी ग्रुप
तीनटा सिक्यूरिटी अछि गोटे डिफॉल्ट अछि गोटे डेमो B12 गोटे AKS1 तो डेमो B12 जोटा हमें क्रिएट करछे राइट तो डेमो B12 को हमें क्लिक करबा डेमो B12 ओके डेमो B12 क्लिक करे तापर डेमो B12 हमें जदे ए सिक्यूरिटी ग्रुप पर्टिकुलर हमें आसले कोन अछि ना आदरे इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल्स अछि सब नेटवर्किंग कांसेप्ट ऊपर आछल नेटवर्किंग जानि थाओ तार बेसिकली नेटवर्क से हम तो पढ़िया बीपीसी तो आउट क्लियरली बुझेबी मैं अधिका बुझेबी बट वर्तमान इनबाउंड और आउटबाउंड इनबाउंड माने जोटा कि तमे इन को जो कनेक्शंस आसुची कनेक्शन इन होची राइट कनेक्शन इन तमे माने से सर्वर को जे किए कनेक्ट करछे इनबाउंड आउटबाउंड माने से सर्वर रु तमे आउटसाइड कोन कनेक्ट करछो आउटबाउंड राइट इनबाउंड कनेक्शंस इन करछे आउटबाउंड फ्रॉम दैट सर्वर टू कनेक्टिंग आउटसाइड आउटबाउंड तो हमें वर्तमान कोन करे जेत हमें सर्वर को कनेक्ट करिवा तो सर्वर को कनेक्शन इन हबो तो इनबाउंड को हमें एक्सेस दबा इनबाउंड रे तो फर्स्ट हमें यदि इनबाउंड देखिबा इनबाउंड रे कोन अछि केवल SSH प्रोटोकॉल रे एक्सेस अछि इनबाउंड सेक्शन रे वी हैव ओनली SSH प्रोटोकॉल हमें एक्सेस दैछे कोन दैछे केवल SSH प्रोटोकॉल 22 राइट तो आबे हमें कोन करबा एबे ना हमें पोर्ट नंबर केते 80 को एक्सेस दबा तो कोन करबे एडिट इनबाउंड रूल्स एडिट करिया तो एटी टाइप कोन आसीबा हमर SSH न करी हमर आसीबो TCP राइट तो हमको HTTP हम कोन दरकार HTTP सिलेक्ट कलो HTTP डिफॉल्ट पोर्ट नहीं गला कोन 80 डिफॉल्ट पोर्ट नहीं गला 80 तो 80 आसी गला राइट 80 डिफॉल्ट पोर्ट आसी गला तो वर्तमान हमें पब्लिक कर दवा एनीवेयर राइट पब्लिक आईपी देन ऐड रूल्स तमे यदि पर्टिकुलर धर पोर्ट को टाइप पाउ न HTTP जानि परनो तमे कोन करबा ना कस्टम TCP मार दबो कस्टम TCP रे तमे एडी टाइप कर दबो कोन दरकार 80 आइदर कस्टम टी नॉलेज पर्टिकुलर पोर्ट तमे चूज करबो को प्रोटोकॉल HTTP प्रोटोकॉल चूज कलो टाइप पोर्ट रेंज ऑटोमेटिकली से नहीं जिवो 80 नहीं गला सोर्स हमें पब्लिक कर देले मतलब पब्लिक को एक्सेस दरकार ऐड रूल्स तो सेकंड रूल सी फर्स्ट रूल 1 ऐड हिची रूल 2 हमर ऐड हे गला पोर्ट नंबर 80 source 00 right select कले then go ahead and save rules ओके सेव रूल हेला तो इनबाउंड रे हमें केतरा रूल पाई गेले वर्तमान HTTP गोटे और SSH दीटा रूल पाई गेले पोर्ट 80 इज एक्टिव नाउ तो वर्तमान हमें जीवा रिफ्रेश करिया सी हाउ इट वर्क्स एक्सेस पाई गेले राइट तो वर्तमान मु चाहू छी सेठी किछि मु गोटे हमर वेबसाइट मु होस्ट करिया पई किछि गोटे वेबसाइट मु होस्ट करिया पई तो मु कोन करिबना मोर इजीली मु गोटे वेबसाइट भी होस्ट करि पानी केमति तो मु एठी चाहू छी मो वेबसाइट को मु कनेक्ट करिया पई चेंज करिया पई तो वर्तमान वेब एप्लीकेशन ने कोन देखु छी खाली इट वर्क्स तो मु एठी चाहू छी कि एडिट करिया पई तो डिफॉल्ट पोर्ट वर्किंग डायरेक्टरी हैला हमरो अपाची सर्वर होची var www html ओके var www /www/html एटा हमर डिफॉल्ट पोर्ट तो ये डिफॉल्ट पोर्ट रे मु चाहू छी डिफॉल्ट पाथ रे बा डिफॉल्ट डायरेक्टरी रे हम पुट करी राइट तो एठी जदि हमें देखिबा एठी किछि नाही तो मु कोन करियो vi index.html गोटे html फाइल क्रिएट कली राइट तो मैं एठी जस्ट html सिंटैक्स जब सेव करूची एटा हेलानी जेतु मु नॉर्मल यूजर रे अछि तो मु फर्स्ट सुडो करबी सुडो vi index.html ओके html फाइल क्रिएट कली लेट्स पेस्ट इट सेव ओके फाइल सेव हे गला तो फर्स्ट इंडेक्स html जदी सेटा हमर रूट डायरेक्टरी ऑफ अपाची सर्वर रूट डायरेक्टरी तो सही डायरेक्टरी मु जा बर्तन कोन करिब ना जदी मु आपको रिलोड करबी हेलो क्लाउड